Hello students, welcome to yet new session of high quality parables. So guys, this is the set 3. So in the last two sets, we have discussed some high quality questions on parables. The same thing we will do in this session also. So let's start. Okay, so what you see on the screen is an actual CAT 2017 question. Okay, let's try to sequence it. Okay, let's look at the statements. The implication of retelling of Indian stories hence takes on new meaning in the modern world. Okay, implication means the consequence. Okay, the result. So ये starting नहीं हो सकता. The stories we tell reflect the world around us. Yes, this looks like a good start. So we can take this as starting statement. We cannot help but retell the stories that we value. After all, they are never quite right for us. Okay, so guys, third option is talking about retelling stories. Okay, ये starting तो नहीं लग रहा. And even if we manage to get them quite right, they are only right for us. Okay, so guys, there is a connection between these two statements. देखो observe करना. We cannot help but retell the stories that we value. After all, they are never quite right for us in our time. And even if we manage to get them quite right, okay. So third option is saying कि जब हम कोशिश करते हैं कि जब रिटेल करें स्टोरीज को तो हम उसको राइट तरीके से कैप्चर नहीं कर पाते, तो हो सकता है भूल जाते हो. एंड इवन इफ वी मैनेज टू गेट देम राइट. Okay, so guys, this and is a continuation of what you said in third option. So starting में हमें 3 और 4 का एक लिंक मिल गया, काफी अच्छा लिंक है, right? Okay, second option is looking like a good start. Okay, तो second option को अपन starting में डाल देते हैं. What else do we have? Fifth option, as soon as we capture a story, the world we are trying to we were trying to capture has changed. Okay, so जैसे ही हम एक story को capture करते हैं, वैसे ही हमारे आसपास का जो वर्ल्ड है वो स्टोरी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है. ठीक है, दैट एज सून एज वी कैप्चर अ स्टोरी द वर्ल्ड वी आर ट्राइंग टू कैप्चर has changed. Okay, so basically fifth option is talking about capturing of the story and its relation to the world around us. ठीक है, so now I have 3 and 4 का link because both talk about retelling of the story. Second option is the starting option. Now the thing is कि second option के बाद next statement कौन सा आएगा, है ना? So second option says the stories we tell reflect the world around us, and as soon as we capture a story, the world we are trying to capture has changed. So guys, observe this. यहाँ पे भी the world की बात हो रही है. ठीक है, कि भाई जो स्टोरीज आप टेल करते हो वो आपके आसपास के वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट करता है, कैप्चर करता है, और वापस से आप वही चीज वही वर्ल्ड की बात कर रहे हो कि भाई आपकी जो स्टोरीज है वो आपके वर्ल्ड को कैप्चर करती हैं. ठीक है, और जैसे ही आप स्टोरी को मतलब है ना कैप्चर कर ले, तो वैसे ही आपके वर्ल्ड पे भी उस चीज का इम्पैक्ट आता है. योर वर्ल्ड ऑल्सो टू सम एक्सटेंट चेंजेस. नाउ very simply you can see that the discussion is same, right? And as soon as implies कि ये continuation है किसी चीज का जो पहले से डिस्कस हो रही थी, और यहाँ पे भी वर्ल्ड की बात है, यहाँ पे भी द वर्ल्ड की बात है, द वर्ल्ड अराउंड अस है ना, द वर्ल्ड अराउंड अस, राइट? सो second is connected with fifth option. Okay, तो second and fifth are connected. Second is the best start, तो ये obviously तो change होगा नहीं क्योंकि second ही best start है. 3 and 4 का connection है. Now the question is that what about first option? The implications of telling of Indian stories hence takes on new meaning in modern world. So guys, this also talks about retelling of इंडियन स्टोरीज. ठीक है, सो अभी हमारे पास 3 और 4 में रिटेलिंग की बात हो रही थी. फर्स्ट ऑप्शन ऑल्सो टॉक्स अबाउट रिटेलिंग, राइट? सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट 1, 3 and 4, these 3 sentences talk about retelling of Indian stories. अब सवाल इतना सा है कि भाई जो फर्स्ट ऑप्शन है उसकी सीक्वेंसिंग कहां पे होगी, है ना? नाउ implication, what is implication? When you talk about implications of something, it is the consequence, it's like the final outcome, right? And if you're talking about the final outcome of retelling stories, कि उसका जो final जो consequence है या outcome है, तो implications या outcome की हम लोग बात करते हैं जब आप ending की बात करते हो. क्योंकि यार आप सोचो, retelling करने के बाद ही उसका आउटकम आएगा, उसका कॉन्सिक्वेंस आएगा. तो ये जो इम्प्लीकेशन है ये बिल्कुल लास्ट में आएगी. सो दैट मीन्स कि 3, 4 and 1 का सीक्वेंस होगा. लेट मी रीड दिस आउट. ओके, लुक एट दिस. We cannot help but retell the stories that we value. After all, they are never quite right for us in our time. So
हम लोग जनरली रिटेल करते हैं स्टोरीज और हम उनको सही तरीकों से कैप्चर नहीं कर पाते. एंड इवन इफ वी मैनेज टू गेट देम क्वाइट राइट, अगर हम स्टोरी को सही तरीके से कैप्चर भी कर लेते हैं, देर ओनली राइट फॉर अस, तो भी इसका मतलब ये नहीं कि सबके लिए राइट है, वो सिर्फ हमारे लिए राइट है. अदर पीपल लिविंग अराउंड अस विल हैव डिफरेंट रीजंस फॉर टेलिंग सिमिलर स्टोरीज, क्योंकि बाकी के जो लोग हैं उनको सेम स्टोरी को वो अलग तरीके से बताएंगे, ठीक है, बिकॉज दे वुड हैव देयर रीजंस फॉर रिटेलिंग द स्टोरी in some other way, right? Which implies, now this is the consequence of what you have just told, ki your way of looking at a story is different from the way others look at the same story. The implication of retelling of Indian stories hence takes on a new meaning. That means कि finally जब आप उस चीज को conclude कर रहे हो तो आप बात करोगे उसके consequence की, कि आप एक story को किस तरीके से capture करते हो versus बाकी लोग सेम स्टोरी को, है ना, किस तरीके से व्यू करते हैं या कैप्चर करते हैं. उसका इम्प्लीकेशन क्या होता है, दैट इंडियन स्टोरीज टेक्स ऑन अ न्यू मीनिंग इन द मॉडर्न इंडिया, राइट? सो दिस वाज अ वेरी बिग हिंट, द इम्प्लीकेशन, राइट? इम्प्लीकेशन रिटेलिंग की बात हो रही थी, ये बिल्कुल लास्ट में, एंड इट इज गिविंग ऑल्सो अ फील ऑफ अ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट. सो गाइस, फाइनली माई आंसर इज 2, 5, 3, 4, 1. So that is the final answer. Okay, let's move ahead. Okay, so this looks like a lengthy question. Let's see. So ये starting नहीं हो सकता, यहाँ पे this आ रहा है. The placebo effect is when an individual's medical condition or pain shows sign of improvement based on fake intervention that has been presented to them as a real one and used to be regularly dismissed by researchers as a psychological effect. So guys, this option is looking like a very good start, and I think you can also see that. The reason being that this is a definition of what placebo effect is. So पता ही हमें कि definitions जो होती हैं वो हमेशा starting में आती हैं. So ये जो है हमें लग रही है एक definition की तरह. The placebo effect is when an individual's medical condition or pain shows sign of improvement based on fake intervention that has been presented to them as real one and used to be regularly dismissed by researchers as psychological effect. तो पहले क्या होता था कि जब कोई पेशेंट मेडिकल या डॉक्टर्स के पास जाता होगा, ठीक है, and these people, they used to give that person like a fake medicine, so the improvement that like the patients used to see was on the basis of fake intervention. So जो researchers थे वो बोलते थे कि नहीं यार कुछ improvement हुआ नहीं है, ये तो सिर्फ एक psychological effect है ना. मतलब इसको ऐसे सोचो कि आपने किसी पेशेंट को अगर प्लेसिबो यानी कि फॉल्स मेडिसिन दे दी, तो जो इंप्रूवमेंट पेशेंट में आया उसको रिसर्चर्स डिसमिस कर देते थे ये कह के कि ये इंप्रूवमेंट हुआ नहीं है, इट्स नॉट अ रियल इंप्रूवमेंट, ओके, इट्स जस्ट अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट, राइट? So that is what was the old definition, old belief system of placebo. तो अभी कुछ चेंज हुआ क्या? अभी कुछ चेंज हुआ क्या? Now this is guys the today's context. Placebo effect now are studied not just for files for real intervention but as a potential portal into the self-healing powers of the body. So understand this. 2 and 5 are connected and 2 and 5 is a pair. सेकेंड ऑप्शन में आपने प्लेसिबो इफेक्ट की डेफिनेशन दी कि पहले क्या मानते थे, पहले ऐसा मानते थे कि प्लेसिबो इफेक्ट कुछ नहीं होता, उससे कोई रियल इंप्रूवमेंट नहीं होता, बस इंसान की साइकोलॉजी चेंज हो जाती है. लेकिन फिफ्थ ऑप्शन आपको बता रहा है कि आजकल ऐसा नहीं है. टुडे द सिनेरियो इज दैट प्लेसिबो इफेक्ट एक्चुअली एनहांसेस योर सेल्फ हीलिंग पावर्स ऑफ द बॉडी. अब यहाँ पे सेल्फ हीलिंग पावर्स ऑफ द बॉडी का जो एस्पेक्ट है वो टुडेज कंटेक्स्ट में relevant है, because पहले तो it was just seen as a psychological phenomena and now you consider placebo effect as something that is like really affecting your body and allows your body to self heal. Now just wait for here for a while and just understand this. How do you think the self healing powers of your body will work? आपके बॉडी की सेल्फ हीलिंग पावर्स कैसे वर्क करेंगी अगर कोई फॉल्स मेडिसिन आपको दे दी गई है? तो आपकी बॉडी की healing powers, despite the fact that you have been given a false medicine, will work when your mind captures the idea that okay, something positive is happening and let me release some chemicals, let me release those components in the body that will allow the body to heal up. Okay, because
जो साइकोलॉजिकल फिनोमेना है प्लेसिबो का, तो वो तो रेलिवेंट है ही, बिकॉज द पेशेंट बिलीव्स कि समथिंग रियल हैज बीन गिवन टू दैट पर्सन. बट हाउ डू यू थिंक यू जस्टिफाई द रियल हीलिंग पावर्स ऑफ बॉडी? Because your mind, when it believes that no, intervention is relevant, it is valid, something is getting better, it has to do with your mind's ability to like generate those positive emotions and release the required chemicals or hormones or whatever, okay, in order to heal your body. Okay, now in that context, don't you think that 5 and 4 are connected? Okay, because self-healing powers of the body. So how do you think self-healing powers of the body will work? Mind has the power to trigger biochemical changes because the individual believes that the given drug or intervention will be effective. So guys, fourth option explains how the self-healing powers of the body work. ठीक है, तो अब मेरा एक काफी मेजर काम हो गया, because now I know that 2, 5 and 4 are linked. Okay, so that is done. So if 2, 5 and 4 are linked, okay, now I'm left with third option and first option. Right. Now, if I look at third option, it says the placebo effect is not solely based on believing in treatment. However, as the clinical settings in which the treatment is administered is also paramount. So, ऑथर ना यहाँ पे एक देखो एक नया एंगल ला रहा है कि प्लेसिबो इफेक्ट अपने आप में काफी नहीं होता, क्योंकि प्लेसिबो इफेक्ट के साथ साथ जो क्लिनिकल सेटिंग्स है. नाउ व्हाट इज अ क्लिनिकल सेटिंग? लेट मी एक्सप्लेन. Okay, now clinical setting, guys, is a broad term. Okay, clinical setting is a broad term, and what clinical setting entails is something that I'm going to now explain to you people. Okay, understand it like this. So when you go to a doctor's office, so one is the treatment that the doctor is giving you. Okay, but then apart from the treatment that you're getting at the doctor's office, it also matters that how you are being treated. Okay, किस तरह की सर्विसेज आपको मिल रही हैं, वहां पे जो डॉक्टर्स हैं वो आपको कंसर्न शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वहां पे जो नर्सेज हैं वो कैसी हैं, आपको मतलब आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से आपको सिचुएशन के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा. ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स गाइज मैटर बिकॉज दीज आर क्लिनिकल सेटिंग्स. Okay, even the fact that whether or not the hospital is clean also is going to impact the way you perceive the entire treatment, है ना, because that is also a part of clinical setting. ठीक है, आप किसी हॉस्पिटल में गए लेकिन वहां पे डॉक्टर्स आपसे बहुत रूडली बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यू विल नॉट गेट बेटर बिकॉज द क्लिनिकल सेटिंग्स आर नॉट कंड्यूसिव. Okay, so those things are part of clinical settings. Now, this is something that's very subtle. This option, clinical setting, has now been explained in first option in more detail. What exactly is clinical setting and how clinical settings work along with placebo effect. क्योंकि देखो थर्ड ऑप्शन में ना आपने ये क्लियर किया कि प्लेसिबो इफेक्ट के साथ साथ क्लिनिकल सेटिंग्स भी मैटर करती है, लेकिन अभी आपने एक्सप्लेन नहीं किया कि एग्जैक्टली क्लिनिकल सेटिंग्स प्लेसिबो इफेक्ट के साथ कैसे कनेक्ट होके इट हेल्प्स यू टू रिकवर. दिस एक्सप्लेनेशन विल कम इन फर्स्ट ऑप्शन. This explanation of clinical settings will come in first option. Okay, look at this. This has huge implications for healthcare system as it operates today, where depleted resources, guys, depleted resources in the clinic or the hospital is a part of clinical setting, and time lead patients rotating in and out of doctor's office. Imagine this. If you keep on rotating the patient, which means कि आप है ना आप किसी पेशेंट को ना ज्यादा टाइम नहीं दे रहे, जल्दी से अंदर आओ जल्दी से बाहर जाओ. ओके, सो यू कीप दीज पेशेंट्स रोटेटिंग, है ना, लाइक इन एंड आउट ऑफ डॉक्टर्स ऑफिस, और मे बी यू आर लाइक जस्ट ट्रांसफरिंग देम टू अदर डॉक्टर्स, एंड लाइक मे बी इवन दोज डॉक्टर्स आर नॉट like trying to really look at the root cause. तो you can see here ये जो part है ना, depleted resources, patients rotating in and out of the doctor's office, these things sound negative. Okay, so and this is obviously a part of how the patient is being treated. And look at this, guys. Oftentimes receiving minimal care or concern, what is commonly referred to as bedside manners from doctors, which means कि doctors उनको time नहीं देते और उनसे ज्यादा बातें भी नहीं करते, and like they are not concerned. Now, I believe now it makes sense to you that what was mentioned as a general term clinical settings, which works with placebo effect, this entire idea of clinical settings and how it affects the patient is being explained in a detailed manner in first option. So यहाँ पे मेरे पास this was like more general as compared to what is more detailed comes in here, right? So my sequence is going to be 3 and 1.
ठीक है, so that is my answer, 2, 5, 4, 3 and 1. Chalo, let's move on to the next question. When you look at your image reflected off a mirror 1 meter away, you see the way you looked 6 nanoseconds ago, the light's travel time to the mirror and back. Okay, so this could be a starting statement, but let's see, क्योंकि यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी स्टेटमेंट का continuation हो. What makes modern cosmology and empirical science is that we are literally able to peer into past. Okay, so guys, this idea कि modern cosmology empirical इसलिए, empirical is something that you can prove, है ना. So what makes modern cosmology and empirical science is that we can literally we are literally able to peer into the past. So modern cosmology को empirical science इसलिए कहा जाता है या इसलिए वो empirical है, क्योंकि cosmology के अंदर हम अपने past को जाके देख सकते हैं. तो this looks like a general statement that targets the entire idea of what modern cosmology is all about. Okay, modern cosmology allows us to look into the past. Good enough. Now, what is in the first option is actually an example of how you can look into your past. So author explains that when you look at your image reflected off a mirror 1 meter away, what you see the way you looked 6 nanoseconds ago, the light's travel time to the mirror and back. So basically जो आपको शीशे में दिख रहा है, ठीक है, वो आपके रियल इमेज के 9 नैनो सेकंड्स पहले की इमेज है, ठीक है. एंड this is like this is what you are able to see in the mirror. Okay, because light takes time to travel, so there's always a delay. So most possibly वो delay इन्होंने 9 नैनोसेकंड्स का यहाँ पे assume किया है. Okay, now अब ये तो बात हुई नॉर्मल मिरर में अपनी इमेज देखने की, और आप जो इमेज देखते हो वो एक्चुअली आपकी अभी की इमेज नहीं है, वो इमेज है जो 9 नैनो सेकंड्स पहले आपने क्रिएट की होगी, ठीक है. वो मतलब जो 9 नैनो सेकंड्स पहले आप लगते होगे. अब जब इसी चीज को आप कंपेयर करोगे, ठीक है, इस एग्जाम्पल को, नाउ you will compare it with the bigger phenomena of how universe used to look like a few a few billion years ago, right? अब वो कैसे देखोगे आप? You will use the similar phenomena. So this comparison happens in fourth option. Similarly, cosmologists do not need to guess how the universe evolved. We can watch its history through the telescope. Okay, now fourth option is comparing the idea that, okay, just like what you can see in mirror was 9 nanoseconds pehle ka image. Okay, similarly cosmologists also do not need to look into to guess basically how the universe evolved. They can actually look into a telescope. Now one question could come ki yaar telescope kaise, because in the case of universe also you can use a telescope and you can actually look at the stars, and these stars, like the image of these stars that you see is not actually the image of today. Okay, it's not the image of today's universe, because light takes times to travel. So what you're actually seeing is the image of the past. Okay, so because the universe appears to be statistically identical in every direction, what we see billions of light years away is probably a fair representation of what our own patch of space looked like billions of years ago. ठीक है, so this, and you don't really need to understand everything, you just need to understand this कि basically आप जो इमेज देख रहे हो वो अभी की इमेज नहीं होती, वो पहले की इमेज का रिफ्लेक्शन होती है. तो वो चीज आपने 2 और 1 में मेंशन की, ठीक है. फिर आपने ये कहा कि सेम चीज आप यूज कर सकते हो यूनिवर्स की एज पता करने के लिए, यूनिवर्स की इमेज देखने के लिए. क्यों? क्योंकि जो इमेज आपको टेलीस्कोप में दिखती है, ठीक है, वो भी पहले की इमेज होती है, ठीक है, जो कि शायद लाइट ट्रैवल होके अब आपको दिख रही है ना. सो इट्स लाइक जो चीजें आप टेलीस्कोप से देख रहे हो वो लाइट बहुत पहले वहां से चली होगी, तो अब आपके सामने वो इमेज आ रही है. और ये यूनिवर्स ऑथर के हिसाब से यूनिवर्स मोर और लेस एक जैसा ही होता है, हर तरफ सेम लगता है. सो दैट विल गिव यू एन आइडिया एज टू हाउ basically the universe used to look, because even the light that you're receiving is not the light of today. It like it has taken billions of years to travel, and now it has reached and you are able to see them through the telescope, right? So that is how you can connect it to 143. Okay,
So that's it guys for today's session. So as you can see on the screen, we have all these top percentilers, so people with 99 plus, 98 plus. So भाई अगर आप लोग भी एक बैच देख रहे हो जहां पे आप एक कंसिस्टेंट स्टडी शेड्यूल को फॉलो करना चाहते हो, सो यू कैन एक्चुअली कंसिडर दिस चाणक्य बैच. So guys, Chanakya batch has started from 27th of May. So you can still join, and you get almost everything that you need for your CAT preparation. बैच की वैलिडिटी भी 31st मार्च तक है, तो इसका मतलब बहुत टाइम है आपके पास. सब कुछ आपका OMATs and all, everything would be covered. Okay, so now what are the features of this batch? So obviously you have the best faculties. कंप्लीट सिलेबस वुड बी कवर्ड. कंप्लीट सिलेबस का मतलब आपका इसमें पूरा सिलेबस आ गया. 6 days अ वीक क्लासेस हैं. जो भी क्लासेस आपकी होंगी उन क्लासेस का वीडियो सॉल्यूशन मतलब आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा. Obviously you can attend the live classes, and then once you are done with the live classes, a recorded part would also be available. You get printed booklets delivered to your doorstep. Then you have live doubt solving classes. Along with that, whatever mocks you have, whatever sectional test you have, you also get a video solution for those as well. Okay, and now we actually have a video, dedicated video to talking about this entire batch. इसमें क्या क्या features हैं, तो you can actually go and watch it on our YouTube channel. So we have this video which talks in detail about the features of Chanakya batch. So guys, that's it for today, and I'm going to see you in the next session. Bye bye. See you.